Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopijana Vallabha Girivardhari. Gopijana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Bhajana Ranjana. Yashodanandana Bhajana Ranjana. Jamuna Tera Vanachari. Jamuna Tera Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopijana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Bhajana Ranjana. Jamuna Tera Vanachari. Jamuna Tera Vanachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tattodaya Mudirayet. Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 9, text. Text 16. श्रीमद् भागवत स्कंद 1 अध्याय 6 श्लोक 16. Nayasya karichid rajan puman veda viditsitam yad vigyagyasya yukta muyanti kavayopihi. O king, no one can know the plan of the Lord. हे राजन, No one can know the plan of the Lord. You don't have one in Hindi? No. Aha. भगवान के निश्चय को कोई नहीं जान सकता. Even though great philosophers inquire exhaustively, they are bewildered. हालांकि बहुत ही प्रामाणिक तत्वदर्शी बहुत जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वो भी भगवान के नियति को नहीं जान सकते. So this is Bhishmadev speaking to Maharaj Yudhishthira. ये भीष्मदेव बात कर रहे हैं महाराज युधिष्ठिर से. Purport Srila Prabhupada. The bewilderment of Maharaj Yudhishthira over his past sinful acts and the resultant suffering is completely negated by the great authority Bhishma. महाराज युधिष्ठिर का विलाप और उनके गितवित कार्यों के बारे में उनकी जो सोच है और दुख है, उसको भीष्म देव पूरी तरह से खंडित कर रहे हैं. Bhishma wanted to impress upon Maharaj Yudhishthira that since time immemorial, no one, including Devatas, Shiva, Brahma, could ascertain the real plan of the Lord. भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर के मन पर इंगित करना चाहते हैं कि बड़े बड़े देवता जैसे ब्रह्मा जी और शिव जी भी भगवान की नियति को और उनके प्लान को समझ नहीं पाए. So what can we understand about it? तो हम कैसे उसके बारे में कुछ समझ सकते हैं? It is useless also to inquire about it. It is useless. Yeah. इसके बारे में विचार करना, सोचना और परीक्षा करना भी समय की व्यर्थता है. Even the exhaustive philosophical inquiries of sages cannot ascertain the plan of the Lord. महान महान तत्वदर्शी भी भगवान के इस सोच को अपने तत्व से जान नहीं सकते. The best policy is simply to abide by the order of the Lord without argument. सबसे अच्छी चीज यही है कि हम भगवान के निर्देशों का पालन करें बिना उसके बारे में कुछ सोचे समझे. The suffering of the Pandava were never due to their past deeds. पांडवों की जो समस्याएं हैं और उनके दुख जो उनके जीवन में आए, वो उनके पिछले जन्मों के कारण बिल्कुल नहीं थे. The Lord had to execute the plan of establishing the kingdom of virtue. भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए ये पूरा प्लान रचा था. And therefore his own devotees suffered temporarily in order to establish the conquest of virtue. इसलिए उनके भक्तों को थोड़े समय के लिए दुख भोगने पड़े ताकि धर्म की स्थापना पूरी तरह से फिर से हो सके.
Bhishmadev was certainly satisfied by seeing the triumph of virtue. भीष्मदेव धर्म की विजय देख करके निश्चित रूप से अत्यंत सुखी थे And he was glad to see King Yudhishthir on the throne. और वे महाराज युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठे देखकर अत्यंत ही खुश थे Although he won the battle of Kurukshetra, although he himself fought against him. हालांकि उन्होंने स्वयं धर्म के विरुद्ध युद्ध किया था Even a great fighter like Bhishma could not win the battle of Kurukshetra. भीष्मदेव जैसे महारथी भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में जीत नहीं पाए Because the Lord wanted to show that vice cannot conquer virtue. क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते थे कि अधर्म धर्म के ऊपर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता Bhishmadev was a great devotee of the Lord, भीष्मदेव एक महान भक्त थे but he chose to fight against the Pandava by the will of the Lord. लेकिन उन्होंने पांडवों के खिलाफ युद्ध करने का निश्चय किया और ये भी भगवान की ही इच्छा थी Because the Lord wanted to show that a fighter like Bhishma cannot win on the wrong side. क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते थे कि चाहे योद्धा भीष्मदेव के जैसा ही क्यों न हो लेकिन अगर वो अधर्म या गलत कृत्यों का साथ दे रहा है तो वो जीत नहीं सकता So, deeply philosophical understanding of the truth. बहुत ही तत्वज्ञान सखोल तत्वज्ञान से जुड़ा हुआ ये सत्य है So, however great philosopher we are, we cannot understand the plan of the Lord. हम चाहे कितने ही बड़े तत्वदर्शी क्यों न हो लेकिन हम भगवान की इच्छा को नहीं समझ सकते Just like this Chaitanya movement, it is incomprehensible. जैसे चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन इसके बारे में हम सोच विचार ही नहीं कर सकते We are in Kali Yuga, as you may know. जहाँ कलियुग में ये बढ़ रहा है And normally we are very fallen and we are in this age religion very chota. और इस युग में हम बहुत ही ज्यादा निकृष्ट और पतित हैं और बहुत ही क्षुद्र हैं But Chaitanya Mahaprabhu came लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु आए and everything transformed. और सब कुछ हमारे तरफ हो गया From very fallen age, it becomes Danya Kali Yuga. बस सबसे निकृष्ट युग से वो बदल करके अब धन्य कलयुग हो गया है You know this song by Lochana Das Thakur, Ke jabi vai bhava sindhu par, Danya Kali Yugera Chaitanya Avatar. So, who can cross this ocean of material existence, but in this Danya Kali Yuga or Chaitanya Mahaprabhu has appeared. लोचन दास ठाकुर कहते हैं अपने एक भजन में कि इस भौतिक जगत को कौन पार करके जा सकता है लेकिन इस धन्य कलियुग में चैतन्य महाप्रभु आए हैं और उनकी कृपा से एक जीव पूरी तरह निस्तार पा सकता है So for the most fallen, Krishna has come and rescued. सबसे क्षुद्र और पतित जीवों के लिए भगवान आए हैं उनका निस्तार करने के लिए This is a great mystery of the plan of the Lord. ये भगवान की एक अबोध इच्छा है That means in this age, after Chaitanya Mahaprabhu came, then we can attain the highest perfection of spiritual life. इसका अर्थ है कि इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु आने के बाद हम आध्यात्मिक स्तर का परमोच्च गंतव्य स्थान प्राप्त कर सकते हैं I was reading yesterday a story about Dhruva Maharaj and how Vishnu is coming in front of him and tell him, wow, you are asking me something impossible to give. मैं कल पढ़ रहा था ध्रुव महाराज की कथा जहाँ पर वो आते हैं भगवान आते हैं ध्रुव महाराज के सामने
और वो ध्रुव महाराज से कहते हैं कि अरे बालक तुम मुझसे ऐसा कुछ पूछ रहे हो जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। Yeah, you are such a small boy, you know. आप इतने छोटे से बालक हो, But you're asking me such great things. और आप इतना बड़ा वर मांग रहे हो। Who are you? So, you say you want something bigger than your father, your grandfather, and your great-grandfather. आपको अपने पिता से भी बड़ा, अपने दादाजी से भी बड़ा, परदादाजी से भी बड़ा कुछ चाहिए। You want something bigger, higher, better quality than your great-grandfather Brahma. आपको अपने परदादा ब्रह्मा जैसे भी कुछ अच्छा और ऊपर चाहिए। How can I give you this? मैं कैसे दे सकता हूँ आपको ये? But I will give you. Krishna is very strong. So he gave. Okay, as you say, I have one star here. Nobody rules over it. It is called polar stars. No name, no rulers. तो अब तक मेरे पास एक ऐसा जगह है जो जिसके ऊपर कोई राज्य नहीं है, उसका नाम है ध्रुव तारा। वो मैं आपको दे सकता हूँ। You can go there and be the rulers of these polar stars. तो आप वहाँ जाइए और ध्रुव तारे पर राज्य कीजिए। And this planet is not destroyed at the end of devastation. प्रलय होगी तो उसके अंत में भी ये जगह ऐसे ही रहेगी, उसका नाश नहीं होगा। At the end of day of Brahma, when everything is collapsed, this planet will stay. जब देवतागण ब्रह्मा जी की आयु, सब ब्रह्मांड सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर भी ये जगह ऐसे ही रहेगी। And all the planets, luminaries, stars, they are turning around these planets. और सारे ग्रह नक्षत्र तारे इस एक ध्रुव तारे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। So I gave you something that even your grandfather has not. तो ये आपको कुछ मैं ऐसा दे रहा हूँ जो आपके परदादा को भी मैंने नहीं दिया है। So इसलिए Chaitanya Mahaprabhu came in this world and he gave something even higher than what can Dhruva Maharaj can attain. चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने ध्रुव महाराज को जो मिला उससे भी ज्यादा हमें कुछ दिया है। Because what attained Dhruva Maharaj? He attained Vishnu. उन्होंने विष्णु को प्राप्त किया and Vaikuntha planets. और वैकुंठ को प्राप्त किया। But we don't want. लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। We don't want to follow in this footstep. We don't want to attain Vishnu and Vaikuntha. हमें ध्रुव महाराज के पद चिन्हों पर नहीं चलना है, हमें विष्णु और वैकुंठ नहीं चाहिए। Sri Raghunath Das Goswami is telling, please do not worship Narayan Lakshmi Narayan, because they will bring you to their kingdom. श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कृपया लक्ष्मी नारायण की उपासना नहीं कीजिए क्योंकि वो आपको उनके धाम लेकर के जाएंगे। So Chaitanya Mahaprabhu came and gave something extraordinary called Unnata Jvalu Prem. चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने कुछ उससे भी ऊपर दिया, उन्नत उज्ज्वल रस। Something higher than you can imagine, has never been given before. Never been given before. जो आपकी परिकल्पना से भी ऊपर हो, ऐसा कुछ जो आज से पहले कभी भी नहीं जीवों को दिया गया। And this Chaitanya Mahaprabhu, great, powerful, manifestation, direct manifestation of Radha and Krishna. और ये चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। So what he can give is much, much higher than what got Dhruva Maharaj. तो वो जो हमें दे सकते हैं वो ध्रुव महाराज को जो मिला उससे बहुत ऊपर है। Because his love of Radha and Krishna, Dhruva Maharaj did not got this time. क्योंकि ध्रुव महाराज को भगवान राधा कृष्ण का प्रेम नहीं मिला इस बार। Benediction he got, but not the highest. उन्हें वर निश्चित रूप से मिला, लेकिन सर्वोत्कृष्ट वर नहीं मिला। Only Chaitanya Mahaprabhu is giving the highest benediction. केवल
केवल चैतन्य महाप्रभु सर्वोत्कृष्ट उपहार वरदान दे रहे हैं। So, and he gave it to who? To the people of Kali Yuga, fallen soul, most fallen. और उन्होंने ये वरदान किसे दिया है? कलियुग के जीवों को, सबसे निकृष्ट और पतित जीवों को। So that's why we are now able to chant Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Dhruva Maharaj was not chanting Radha Madhava Kunja Bihari. ध्रुव महाराज जय राधा माधव कुंज बिहारी का भजन नहीं कर रहे थे। But we are chanting and it is quite extraordinary. और हम जप कर रहे हैं और कितना अद्भुत है। From the most fallen, born in, enfin, I speak for me, born in the Mriksha family, and doing all kind unimaginable nonsense, then still coming to this line of Chaitanya Mahaprabhu. तो देखिए, हमने सब कुछ किया है जो नहीं करना चाहिए अपने जीवन में, फिर भी चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में भाग लिए हैं। इससे ज्यादा बड़ी कृपा और क्या हो सकती है? So not only he gave the highest, but he gave the highest to the most fallen. चैतन्य महाप्रभु ने केवल सर्वोत्कृष्ट वरदान ही नहीं दिया है, लेकिन वो सबसे निकृष्ट प्रकार के व्यक्तियों को दिया है। On the Karmi, they play in casino, they say bingo when they gain the money. जब आप देखेंगे कैसीनो में लोग जाते हैं और कुछ पैसे जीतते हैं तो वो बिंगो कहते हैं। So we got the bingo. हमें भी ऐसे युग का बिंगो मिला हुआ है। The most highest things, even to the most fallen. Wow. सबसे उत्कृष्ट चीज मिली है सबसे घटिया प्रकार के लोगों के लिए। And not so much to do. और कुछ करना भी नहीं है। Not like Dhruva Maharaj. ध्रुव महाराज की तरह नहीं। Simplified, shortcut meditation he gave. चैतन्य महाप्रभु ने एकदम सीधा सा योग पद्धति दी है। You have read already Dhruva Maharaj what he did, for months and months, meditating on one leg, even on one leg, stay on one leg for 10 minutes. ध्रुव महाराज ने महीनों तक एक पैर पर खड़ा रखा है। आप 10 मिनट खड़े हो सकते हो क्या एक पैर पर बिना हिले? Try. So 10 minutes we cannot, 10 मिनट खड़े नहीं रह सकते। He stay for months and months and months and eating only at the beginning some fruits, after some dry leaves, and then only hair, hair only once a week. And was satisfied like this, He became very, very powerful. That the whole world was trembling. What's going on? Suffocating, because he blocked all the hairs of his body. The whole world was suffocating. They went to Vishnu, something's going on, one demon somewhere. तो पहले उन्होंने जो तपस्या शुरू की तो कुछ फल खा रहे थे, उसके बाद में कुछ गिरे हुए सूखे पत्ते खा रहे थे, उसके बाद उन्होंने सांस पर जीना शुरू किया, एक हफ्ते के बाद एक सांस, उसके बाद में 6 महीने के बाद एक सांस। उनकी तपस्या इतनी तीव्र हो गई कि बाद में संपूर्ण ब्रह्मांड को उनकी तपस्या का ताप मिलने लगा। सारे देवतागण भगवान के पास गए, भगवान विष्णु ये क्या हो रहा है, हमें सांस लेने को तक मुश्किल हो रही है। Vishnu said, don't worry, it is not a demon, it is a devotee, but he's a little bit too enthusiastic. I will go to quiet him down. आप बुरा नहीं मानिए, सतर्क मत हो जाइए, ये कोई दानव नहीं है, ये भक्त ही है मेरा, लेकिन थोड़ा ज्यादा उत्साही भक्त है, मैं उसे ठीक करने जाता हूँ। So what Dhruva Maharaj did, no one can do it. जो ध्रुव महाराज ने किया, वो हम में से कोई नहीं कर सकता। But still, Lord Chaitanya Mahaprabhu gave this highest love of God to the most fallen in a very simple way. फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने आकर सर्वोत्कृष्ट उपाधि और वरदान दिया है हमें सबसे आसान तरीके। He gave this holy name
and now you chant. उन्होंने हरिनाम दिया और कहा अभी आप जप करो. To the most fallen, Chaitanya Mahaprabhu came, story is there, Jagaye Madaya. सबसे निकृष्ट प्रकार के व्यक्तियों के लिए भी चैतन्य महाप्रभु ने अपने हृदय का दरवाजा खोला. जगाई मदाई की कथा में हम ये पढ़ सकते हैं. They was fallen almost like Westerners. तो प्रायः पाश्चात्य व्यक्ति की तरह ही गिरे पड़े थे. Because they was originally Brahmin family. हालांकि वो ओरिजिनली ब्राह्मण परिवार से थे. But they are fallen, though they was drunkard and everything. We know they did many bad things, but in the West, nobody can notice this kind of things. Everybody is doing it. हालांकि बाद में उनका पतन हो गया और वो सारे गलत कृत्य कर रहे थे, दारू पी रहे थे, नशा कर रहे थे. लेकिन यही सब पाश्चात्य देशों में चलता है, लेकिन वहाँ पे वो साधारण सी बात है. So Chaitanya he saved them and make them devotees. चैतन्य महाप्रभु ने उनका उद्धार किया, उन्हें भक्त बनाया. And then later on, you know, on this parampara, then he sent his super loyal, extraordinary, powerful devotees to the West to preach. यही परंपरा आते हुए चैतन्य महाप्रभु ने अपने सबसे महान शक्तिशाली भक्तों को पाश्चात्य देशों में भेजा उनके नाम का प्रचार करने. Not only he gave the highest to the most fallen, but he gave a process very easy to accomplish. हालांकि उन्होंने सबसे उत्कृष्ट चीज सबसे निकृष्ट प्रकार के जीवों को दी है, फिर भी वो अत्यंत सुलभ करके दी है. So if we cannot follow this, then no chance. अगर इतना भी नहीं कर सकते तो कोई होप नहीं है. So we have to take what is the lessons of Dhruva Maharaj is that he was super enthusiastic, super determined to do his yoga practice, bhakti. तो ध्रुव महाराज से हमें क्या सीखना चाहिए? ध्रुव महाराज अत्यंत उत्साही थे और अत्यंत दृढ़ संकल्प थे अपनी योग साधना के प्रति. So this we have to do with much enthusiasm and practice. We have to go on our bhakti path. इसलिए हमें भी यहाँ से सीखते हुए बहुत दृढ़ निश्चय और संकल्प से हमारी भक्ति की राह में आगे बढ़ना है. So one interesting thing is that Krishna wanted to show the world that even if my devotee is on the wrong side, just like Bhishmadev fighting against Pandava, he cannot win. तो भगवान हम देखते हैं यहाँ हमें बताना चाहते हैं कि मेरा महान भक्त ही क्यों न हो, शक्तिशाली क्यों न हो भीष्मदेव की तरह, लेकिन अगर वो अधर्म की राह पर चल रहा है, अधर्म का साथ देता है, तो वो जीत नहीं सकता. Bhishmadev is what? Not ordinary person, he is Mahajan. भीष्मदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक महाजन है. 12 Mahajan. 12 महाजन है. I have only 10, so. मेरे पास केवल 10 उंगलियां हैं. So, he is one of them. उनमें से एक है. Later on, he is passing away now, and then he's giving instruction. Krishna came to hear. और वो जब उपदेश दे रहे हैं, तो भगवान वहाँ पर मौजूद हैं सुनने के लिए, युधिष्ठिर महाराज भी मौजूद हैं सुनने के लिए. But from one reason or another, he fought against the Pandava. He was on the wrong side, and Krishna was not agreeable with this. इसी कारणवश उन्होंने धर्म और पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया और भगवान इससे ज्यादा प्रसन्न नहीं थे. So we have to be careful that we can be a devotee, good standing like this, but we should be careful not to oppose devotee, fight against devotee, criticize devotees. Sadhu nindo. तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा सोच विचार करके कभी वैष्णवों की, साधुओं की निंदा नहीं करनी चाहिए, उनसे अपशब्द नहीं कहने चाहिए, उनके बारे में गलत अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, साधु निंदा से बचना चाहिए. So the Pandava, they was more intimate than Bhishmadev. तो पांडव जो थे वो भगवान को
भीष्म पितामह से ज्यादा नजदीक थे. They had always Krishna on their side, in their family. हम देखते हैं भगवान हमेशा उनके साथ थे. So परिवार में भी और धर्म में भी. that means there is different grades of devotees. इसका अर्थ है कि भक्तों के भी कई स्तर It is होते हैं. explained nicely in Brihad Bhagavatamrita Sri Sanatan Goswami. श्री सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत में इसकी बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं. Different stages of devotees. अलग-अलग स्तर और श्रेणी के भक्त. They are all devotees, but different intimacy, different, more higher, lower devotees. सभी भक्त हैं, लेकिन उनके भगवान के साथ में नजदीकियां. It is not that all devotees are same. ऐसा नहीं है कि सारे भक्त एक समान हैं. They are all very dear to Krishna, but according to their advancement, Krishna is reciprocating. Ye yatamam prapadyante tam stitaiva bhajamyaham. वो सारे भक्त हैं, लेकिन एक भक्त जितना प्रगति करता है उसके अनुरूप भगवान उसके साथ आदान प्रदान करते हैं. ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्. So Pandava was very advanced in bhakti. पांडव जो थे भक्ति में अत्यंत प्रगत थे. But it is not the end. Above them was even Uddhav. लेकिन यही अंत नहीं है सीढ़ी का. उसके ऊपर हम देखते हैं महाराज उद्धव है. Very, very intimate followers and friends of Krishna. भगवान के बहुत ही करीबी मित्र और अत्यंत ही करीबी सखा. Krishna say to him, he say, no one is as dear as me as you are. कृष्ण उनसे स्वयं कहते हैं कि आपके समान प्रिय और नजदीकी मुझे और कोई नहीं. So very intimate friends. But still there is higher. That's why he sent Uddhav to, I told last time, you know. हालांकि बहुत करीबी है, लेकिन यहाँ पर भी सीढ़ी खत्म नहीं होती. इसीलिए उद्धव को उन्होंने वृंदावन भेजा. मैंने आपसे पिछली बार कथा कही थी. So Prabhupada, what he gave us the highest. प्रभुपाद जी ने हमें क्या दिया? सर्वोत्कृष्ट उपहार दिया. But in the same times he gave explanation. He had to begin with the, lowest explanation for the Westerners. लेकिन तत्वज्ञान का जो उन्होंने निरूपण किया वो पाश्चात्य देशों के लोगों के लिए सबसे साधारण तरीके से किया. Still he gave everything in tattva in his books. लेकिन फिर भी तत्वज्ञान पूरी तरह से प्रभुपाद जी के ग्रंथों में मौजूद है. And he was showing the example of this pure bhakti. और वो अपने जीवन में स्वयं इस शुद्ध भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे. He was chanting Jai Radha Madhava every morning. वो स्वयं जय राधा माधव हर दिन सुबह भजन किया करते थे. He did not know any other songs? उन्हें कोई और भजन नहीं पता थे क्या? Of course. But he always chanted this song because it is, like Vrindavan, mantra. तो वो यही भजन क्यों गाया करते थे? क्योंकि ये भजन जो है वो वृंदावन मंत्र है. Jai Radha Madhava Kunjo Bihari. Everything in this first line is given. We are chanting the name of Radha Madhav who are in the Kunj. Bihari means playing. तो हम इस पहली लाइन में ही देखते हैं, पहली पंक्ति में जय राधा माधव. हम किनका गुणगान कर रहे हैं? राधा माधव का गुणगान कर रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं? कुंज में विचरण कर रहे हैं. This is what Chaitanya Mahaprabhu has come to give. This very higher vision of the absolute truth. यही देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए. So शाश्वत सत्य का सर्वोत्कृष्ट रूप. Dhruva Maharaj has one vision of the absolute truth in the form of Vishnu. I think Kshirodakashayi Vishnu came. ध्रुव महाराज को परम सत्य का विष्णु रूप दिखता है. क्षीरोदक्षाई विष्णु का जो रूप है. And we can have the darshan of
Radha Krishna. Prabhupada installed so many Radha Krishna in the world. लेकिन हमें जो दर्शन मिलता है परम सत्य का वो राधा कृष्ण के रूप में। श्रील प्रभुपाद जी ने पूर्ण जगत में कितने सारे राधा कृष्ण के विग्रहों की स्थापना की। So when he was installing this Radha Krishna, he says actually you should worship them like Lakshmi Narayan with all opulences and like this. तो प्रभुपाद जी हमें कहा करते थे कि हालांकि हम राधा कृष्ण की प्रतिष्ठापना कर रहे हैं, लेकिन उनकी अर्चना पद्धति आप लक्ष्मी नारायण की तरह ही करें, जैसे पूरी तरह से वैभव और ऐश्वर्य के साथ होती है। But the goal is to develop love for Radha and Krishna. लेकिन जो गंतव्य है वो भगवान राधा और कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है। To become intimate devotees of the Lord. तो भगवान के बहुत ही करीबी पार्षद, निकटवर्ती पार्षद बनना। So then if the goal is Radha and Krishna, so where is the place of Chaitanya Mahaprabhu? तो जब गंतव्य राधा कृष्ण का धाम है तो चैतन्य महाप्रभु वहां कहां बीच में आ गए? How do we see Chaitanya Mahaprabhu in these Radha Krishna pastimes? हम चैतन्य महाप्रभु को कैसे देखें राधा कृष्ण की लीलाओं में? One form? Yes, is non-different than Radha and Krishna. ये सत्य है, चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण से अभिन्न नहीं है। He is Krishna with the bhav of Radha. वे कृष्ण ही हैं जो राधा भाव में आए हैं। So Chaitanya Mahaprabhu helps us to really go into this Radha Krishna's worship. चैतन्य महाप्रभु हमें राधा कृष्ण की लीलाओं में और वंदना में आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। You sure? अर्चना में। Okay. So he is with them. Chaitanya Mahaprabhu is with Radha and Krishna. चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण के साथ में हैं। But the goal is Radha Krishna Pranamor Yugala Kishore. The goal is to meditate on Radha and Krishna, but under the guidance of Chaitanya Mahaprabhu. तो मूल उद्देश्य है राधा कृष्ण की भक्ति करना, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार। So, our goal is fixed now. We know what is the goal. हमारा गंतव्य अब निश्चित हो गया है। हमें पता है हमें क्या करना है। It's good already to know what is the ultimate goal I have to attain. तो ये जानना बहुत अच्छी चीज है कि मेरा गंतव्य स्थान क्या है, उसके मुझे पहले से ही पता होगा। And then the practice we know also. We know all the practice. Prabhupada gave us everything to really go into this meditation. और उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, ये भी प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। So in this way, we have to proceed. It is a long path, but always keep some enthusiast on this path. तो लंबा मार्ग है, लेकिन इस लंबे मार्ग पर हमें उत्साह से चलना है। If you are, feel tired, or if you have no taste in practicing, that means something's wrong. अगर इस मार्ग पर चलते हुए आप निरुत्साही हो जाते हैं या आपको रुचि नहीं है, इसका अर्थ आप कहीं पर गलती कर रहे हैं। Because the normal thing is to get this ruchi. क्योंकि साधारण है कि इस मार्ग पर हमें रुचि मिलनी चाहिए। How fast it is depends on you. वो कितनी जल्दी मिलेगी आप पर निर्भर है। But ruchi must come. लेकिन रुचि आनी ही चाहिए। If the ruchi does not come, you have no taste for reading, no taste for chanting, no taste for bhajan, no taste for kirtan, no taste for associate with devotees. That means something wrong. तो अगर हम इस मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन वैष्णवों के संग के लिए, नाम जप के लिए, कीर्तन के लिए, भजन के लिए, पढ़ने के लिए
अगर रुचि नहीं आ रही है अर्थात हम कहीं पर बहुत बड़ी भारी गलती कर रहे हैं. Just like a flowers, first it become like a bud, and little by little it'll open like this. तो जैसे हम एक फूल देखते हैं पहले वो कली के रूप में होता है बाद में धीरे 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 उसकी पंखुड़ियां खुलने लगती हैं. So at the beginning we don't have prem, no bhav, no ruchi, no possible. तो वैसे ही हमारे भक्ति में पहले पहले के जीवन में भाव रुचि वगैरह नहीं रहेगा. But when we are practicing, then little by little all these things is coming up. It should be. तो जैसे हम उसको अपने जीवन में करते रहेंगे वैसे धीरे 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 रुचि वगैरह आनी चाहिए, वो आनी ही चाहिए. It is not that there is one person, one being, it will not work, doesn't work on him. तो ऐसा नहीं होगा कि किसी के ऊपर ये चीज काम नहीं करेगी, ये चीज हर किसी के ऊपर काम करेगी. Actually it is, I am the example. But normally there is no possibility. Everyone practicing bhakti will get ruchi. तो जो भी भक्ति मार्ग का पालन करेगा वो भक्ति में रुचि प्राप्त करेगा ही करेगा. It is a natural path. ये स्वाभाविक मार्ग है. Just like a flower naturally is growing. जैसे फूल स्वभावतः वो कली से फूल बनता है. Or a mango becomes ripe. It is not that there is one mango who does not become ripe. जैसे हम देखते हैं आम भी समय से पक जाता है, तो कोई भी ऐसा आम नहीं है जो समय के बाद पकता नहीं है, हर एक आम पकता है. As long as the mango is on a tree, it will become ripe. जब तक वो आम अपने आप को पेड़ से लटकाए हुए है वो उसको पकना ही पकना है. But if the mango falls before on the floor, पकने से पहले अगर धरती पर गिर गया तब वो कच्चा रह जाएगा. so means we have to stay in association with devotees as much as possible. इसका अर्थ है कि हमें भी भक्तों के संग में रहना है जितना स्वाभाविक हो सके. And we will become ripe under the sun of bhakti. और हम सूर्य के तेज के तले, भक्ति के तेज के तले हम भी पक जाएंगे. Wonderful process. You are sure to attain the goal. बहुत ही अद्भुत मार्ग है, गंतव्य निश्चित पहुंचेंगे. Not like in casino where you play money and no bingo, and then you become, all money gone and nothing, तो ऐसे जुआ खानों की तरह नहीं कि आप पैसे डालते जाए और आप सब कुछ छोड़ते जाएं. He does not know because he never plays, so he does not know. He don't know how to explain because ऐसा नहीं होगा कि आप हारते जाए और बाद में आप सोचे अरे मेरे पैसे का क्या हो गया, बात तक कहीं से. some people they commit suicide. कुछ लोग आत्महत्या करते हैं. They are very addicted to play, and then they lost everything. और बहुत सारे लोग इसके प्रति बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं, सब कुछ खो देते हैं और बाद में आत्महत्या करते हैं. It's a horrible activities, gambling. तो देखिए कितने महापापी कार्य हो सकते हैं, आपका जान तक ले सकते हैं. Because gambling means you put all your faith in chance. तो जुआ का अर्थ है कि आप आपका सारा पैसा भाग्य के ऊपर छोड़ रहे हैं. So some people they say everything is under karma, like we spoke last time. तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि सब कुछ कर्म के आधार पर है, जैसे हमने पिछली बार चर्चा की थी. So if there is good karma, he will win. If bad karma, he will lost. तो मेरे अच्छे कर्म है तो मैं जीत जाऊंगा जुआ, अगर मेरे बुरे कर्म है तो मैं जुआ हार जाऊंगा. But the point is that it is like this, like we spoke last week, that it is under the control, under times factors, and everything can happen. तो मूलभूत तत्व ज्ञान तो ये है कि सब कुछ समय के आधार पर चल रहा है और कुछ भी हो सकता है. So we don't put our faith in chance of gambling. तो इसीलिए हमें अपने कमाए हुए धन को भाग्य और जुए के अधीन नहीं करना चाहिए. Otherwise it will be, if it's under the laws of karma, then devotee can say, okay, I have good karma. If I play, I will win.
for sure I will give all my money to Babu. तो अगर केवल कर्म के आधार पर पैसा चलता तो कोई भी व्यक्ति कह सकता है, अरे मैं तो अभी भक्त हूँ, मैं तो बहुत अच्छे कार्य कर रहा हूँ, मैं सारा पैसा जुआ में लगाऊंगा, जितना जीतूंगा सब श्याम दास को आके दूंगा. But the fact it is more complicated than this. It is under time, and then you don't know what's going on. So don't put your face in gambling. That's why we are telling don't no gambling. तो केवल कर्म ही नहीं है, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो इसको इस गतिविधि को नियंत्रित करते हैं. तो इसलिए हम कहते हैं कि कृपया आप जुआ वगैरह मत खेलिए और अपने धन को समय और जुए के अधीन मत कीजिए. Or money, how you call this? In you put some investment in this, in that, and you want to get money. But it is also like gambling. तो हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, स्टॉक मार्केट में, वो भी एक जुए की तरह ही है. Not good. अच्छा नहीं है. अच्छा नहीं है. So we are putting our faith in Radha Krishna. And not Krishna alone, Radha and Krishna. There is a special movement where worshipping Radha and Krishna, never Krishna alone. हमारी भक्ति जो है हम राधा कृष्ण के प्रति संचालित करते हैं, केवल कृष्ण के प्रति नहीं, राधा और कृष्ण के प्रति. In this bhakti path there is much ras. इस भक्ति मार्ग में ये भक्ति मार्ग अत्यंत रसपूर्ण है. If Krishna is alone, he is okay, he is ras himself, but something missing, he will look here and here, तो भगवान कृष्ण अकेले भी हो तो भी ठीक है, वो रसराज है, लेकिन फिर भी उस रस को पूर्ण करने के लिए वो इधर-उधर देखते रहते हैं. No Lakshmi and no Radha, no, what's going on here? वो बोलेंगे अरे लक्ष्मी नहीं है, राधा नहीं है, यहाँ क्या चल रहा है? It is Brahman. ये तो ब्रह्मवाद है. What I'm doing here? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? No, Krishna means devotees and devotees and gopis. Then there is ras increasing. तो जहाँ पे भगवान है, इसका अर्थ वहाँ पे गोपियाँ हैं, रास है, रस है. तो रस है अर्थात रास है, और वो हमेशा बढ़ता रहता है. He is Rasaraj. He is looking for rasa everywhere. भगवान रसराज है, वो रस का आस्वादन करने के लिए हमेशा लालयित रहते हैं. In himself he is fully satisfied. Still he wants ras with others. वो अपने में आत्म संशुद्ध है, लेकिन फिर भी वो रास के लिए, रस के लिए हमेशा लालयित होते हैं. So ras, the highest ras he can receive Krishna is with Radha. तो परमोच्च रस की अनुभूति भगवान राधा रानी के साथ. Many gopis are there, but no one can give as much ras as Radha. बहुत सारी गोपियां हैं, अनंत गोपियां हैं, लेकिन राधा रानी जो रस दे सकती हैं, वो कोई नहीं दे सकता भगवान को. That's why we are Radha Krishna Bhakta. इसलिए हम राधा कृष्ण के भक्त हैं. Not Krishna only. केवल कृष्ण नहीं. It is very special. This Bhakti Ras has been brought by Chaitanya Mahaprabhu. ये बहुत ही स्पेशल है, इस रस को चैतन्य महाप्रभु ने लाया है. So he gave us the highest extraordinary path of devotional service unto Radha and Krishna. तो चैतन्य महाप्रभु ने आकर के हमें सर्वोत्कृष्ट भक्ति योग का मार्ग दिया है राधा कृष्ण के प्रति. And because he is Radha Krishna combined, then he can sit next Radha and Krishna. क्योंकि वो राधा कृष्ण एक रूप में है, इसलिए वो राधा कृष्ण के बाजू में बैठ सकते हैं.
But you cannot put Radha and Krishna and Gaur Nitai same altars. लेकिन आप राधा कृष्ण और गौर निताय को एक ही ऑल्टर में नहीं रख सकते, Because Ras is changing. क्योंकि रस जो है वो बदल जाता है. Gaur is Balaram, Nitai is Balaram. Balaram is never here when Krishna plays with his gopi. तो नित्यानंद अर्थात बलराम जी, तो जब भी भगवान रास खेलते हैं वहाँ नित्यानंद प्रभु या बलराम जी नहीं होते हैं. So when you want to put Radha and Krishna and Gaur Nitai, two separate paroksha, it is called. तो इसलिए जब Shambha. Shambha, like room, different room. तो अगर आप राधा कृष्ण और गौर निताय को एक साथ रखना चाहते हैं तो उसके लिए दो अलग अलग ऑल्टर या दो अलग अलग खाने या दो रूम्स. Understand? समझ गए? It should be done like this. Never put Radha and Krishna near to Gaur Nitai. Always a separation. राधा कृष्ण और गौर निताय को एक साथ कभी नहीं रखना है, दोनों के बीच में फासला होना ही चाहिए. But if you have only Gaur, then you can be put near to Radha and Krishna. लेकिन अगर केवल गौरंग महाप्रभु हैं तो राधा कृष्ण के साथ खड़े हो सकते हैं. In some temple there is like this, Gaur, only Gaur, Radha and Krishna and Gaur. तो कुछ मंदिरों में आप देखते हैं ऐसा है, राधा कृष्ण है और केवल गौरंग महाप्रभु साथ में है. In this way, we go on this very beautiful path of Radha Krishna Bhakti. इस तरीके से हम राधा कृष्ण के भक्ति के सुंदर मार्ग पर अनुक्रमण करते हैं. So we have got some things that Dhruva did not got, Prahlad did not got, Bhishmadev did not got, Pandava did not got, no one before. You know, this is a special, extraordinary gift of Sri Chaitanya Mahaprabhu. He gave us the highest. तो हमें जो मिला है वो न ध्रुव महाराज को मिला है, न प्रहलाद महाराज को मिला है, न पांडवों को मिला है, न भीष्मदेव को मिला है, किसी को नहीं मिला है. तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की खास उत्कृष्ट कृपा है हमारे ऊपर. If someone is thinking that there is something higher than Radha and Krishna, you have right to think so. अगर आप में से कोई सोचते हैं कि राधा कृष्ण की पहचान और उनकी भक्ति से ऊपर भी और कुछ है, आपका वो हक है सोचने का. Do you think so? आपको लगता है क्या? Somebody can say Lakshmi Narayan, somebody can say Sitaram. Many will say Sitaram. You have right, because it all in Tattva Vichar, it is all truth, Supreme Personality of Godhead. Radha Krishna, Sitaram, Lakshmi Narayan, Vishnu, Lakshmi, it are all same Tattva. All, but in Rasa Vichar, then there is some differences. In understanding under Rasa intelligence, then you can know, oh, this is highest. तो अगर केवल तत्व विचार के संदर्भ में चर्चा करें तो आप समझ सकते हैं कि राधा कृष्ण है, सीताराम है, लक्ष्मी नारायण है, ये सभी सेम ही है, सब सरीखे ही है, सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी शक्ति है. लेकिन अगर रस विचार करें तो हमें समझ में आएगा कि एक ऊपर है और बाकी सब नीचे है. Even some devotee of Lord Chaitanya had other rasa than Radha and Krishna. Impossible for them to change, like Murari Gupta or Srivas Thakur. तो कुछ भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के जो अलग रसों में हैं, लेकिन बाद में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनका रस बदल गया, जैसे मुरारी गुप्ता और श्रीवास ठाकुर. Srivas Thakur was Lakshmi Narayan worshipper. श्रीवास ठाकुर जो थे वो लक्ष्मी नारायण के उपासक थे. And Murari Gupta was Sitaram worshipper. मुरारी गुप्ता सीताराम के उपासक थे. So there was, perplexed, because Chaitanya Mahaprabhu always speaking Radha Krishna, maybe I should go to that too. तो वे हमेशा दुविधा में रहते थे कि चैतन्य महाप्रभु हमेशा राधा कृष्ण के बारे में कह रहे हैं, शायद मुझे राधा कृष्ण की उपासना करनी चाहिए. But impossible. His Svarup was with
Sitaram or Srivas with Lakshmi Narayan. But Chaitanya Mahaprabhu did not reject them. He embraced them. Yeah, I knew he was very fixed in your worship. Very good. लेकिन ये संभव नहीं हो सकता था क्योंकि मुरारी गुप्ता का जो मूलभूत स्वरूप है वो प्रभु सीताराम के साथ है। उसी प्रकार श्रीवास ठाकुर का मूलभूत स्वरूप लक्ष्मी नारायण के साथ है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ढकेल करके बाजू में नहीं किया, उन्हें भी आलिंगन किया कि आप अपनी अपनी स्वेच्छा से अपने इष्ट देव की उपासना कर रहे हो, अत्यंत ही उत्कृष्ट है। Okay, is there any question or comments or rectification? किसी को कोई प्रश्न है, टिका है, किसी को कोई कुछ सही करना है जो मैंने गलत बोला? Guruji, request is there to extend the class by 20 minutes from kitchen. Prasadam is not ready. Yeah. No, I'm finished. Me too, I'm hungry now. Finished. No. Request is there to extend the class. To extend? It is not ready, 20 minutes. 20 minutes more? Oh, no. We can do some bhajan also after a while. But so is there any question? Depends on if you have some question, then we can go on.